This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you are watching NTV Houston. This is Madiha Masood. I'm Usman Khalid Malik. First, the headlines. टेक्सास रीओपनिंग ऑर्डर्स के 2 हफ्ते के बाद ही कल के रोज एक ही दिन में सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हुई। टोटल केसेस 44,775 हैं, जबकि डेथ टोल 1,258 हो चुका है। ह्यूस्टन सिटी में ओवरऑल कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 13,910 तक जा पहुंची है और 5,274 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं, जबकि डेथ टोल 353 से बढ़कर 361 हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कंफर्म केसेस 1.4 मिलियन एक्सीड कर चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 85,906 बताई जा रही है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस अपना असर खूब दिखा रहा है। टोटल कंफर्म केसेस 4.4 मिलियन से ऊपर जा चुके हैं। वायरस से मरने वालों की तादाद 300,000 क्रॉस कर चुकी है। You're watching NTV Houston। अब बढ़ते हैं खबरों की डिटेल्स की तरफ। कोविड-19 आउटब्रेक को रोकने की कोशिशों के साथ साथ स्टेट्स का फोकस अब इकोनॉमीज रीओपन करने पर है, लेकिन टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबर्ट की तरफ से रीओपनिंग ऑर्डर्स के 2 ही हफ्ते बाद कल के रोज एक ही दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। स्टेट डाटा के मुताबिक वेंसडे और थर्सडे के बीच 58 कोरोना वायरस पेशेंट जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद डेथ टोल 1,158 से बढ़कर 1,258 हो चुका है। 58 कंफर्म कोविड-19 डेथ्स में से 3 पेशेंट्स का ताल्लुक टैरन काउंटी से बताया जा रहा है, जबकि 6 लोगों की मौत डलस काउंटी में हुई है। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो स्टेट में टोटल 116 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है। स्टेट में इस वक्त टोटल कंफर्म कोरोना वायरस केसेस 44,000 के करीब हैं, लेकिन डिफरेंट स्टडीज में ये बात सामने आई है कि एग्जैक्ट फिगर्स इससे काफी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे। अपने रीसेंट इंटरव्यू में गवर्नर एबर्ट ने बताया कि उनका फोकस डेली टेस्ट की तादाद बढ़ाने पर है। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक 35,853 नए टेस्ट थर्सडे और 49,259 टेस्ट वेंसडे को किए जा चुके हैं। ओवरऑल ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया की बात की जाए तो लास्ट 24 आवर्स में 200 से ज्यादा नए कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। ओवरऑल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 13,910 तक जा पहुंची है और 5,274 पेशेंट्स रिकवर भी हो चुके हैं। डेथ टोल 353 से बढ़कर 361 हो चुका है। इस वायरस ने अपने सबसे ज्यादा असर ह्यूस्टन सिटी में दिखाया है। सिटी में टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस 5,177 हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद 109 हो चुकी है और 1,251 पेशेंट्स रिकवर भी हो चुके हैं। हैरिस काउंटी में केसेस 3,640 हैं। डेथ टोल 84 और रिकवर होने वालों की तादाद 2,165 बताई जा रही है। फोर्ट बेंड काउंटी में इस वक्त टोटल केसेस 1,471 हैं। डेथ टोल 40 और 270 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। गैवस्टन काउंटी में 693 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। 30 की मौत हो चुकी है और 430 ठीक भी हो चुके हैं। मॉन्टगोमरी काउंटी में 773 केसेस हैं। 18 पेशेंट्स की जान जा चुकी है और 272 रिकवर भी हो चुके हैं। ब्राजोरिया काउंटी में 840 केसेस हैं। डेथ टोल 9 है और 371 पेशेंट्स ठीक हुए हैं, जबकि ब्राजोस काउंटी में 305 कंफर्म केसेस हैं। डेथ टोल 18 है और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 148 है। ब्राजोस काउंटी में 305 कंफर्म केसेस हैं। डेथ टोल 18 है और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 143 है। मैरागोड़ा काउंटी में केसेस 65 हैं। 5 डेथ्स और 35 पेशेंट्स ठीक हुए हैं। वॉशिंगटन काउंटी में 179 केसेस हैं, 22 डेथ्स और 39 रिकवरीज के साथ। वार्डन काउंटी में 42 केसेस हैं, 31 पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। चैम्बर काउंटी में 52 केसेस हैं और 44 रिकवरीज, जबकि वॉकर काउंटी में 374 केसेस, 19 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 71 है। वॉलर काउंटी में 37 केसेस और 31 रिकवरीज रिपोर्ट हुई हैं। पोक काउंटी में इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 47 है और 16 पेशेंट्स ठीक हुए हैं। ऑस्टिन काउंटी में टोटल केसेस 17 हैं। रिकवर होने वाले लोगों की तादाद अब तक 10 है। ग्रिम्स काउंटी में 56 कंफर्म केसेस हैं, 1 डेथ और 12 रिकवरीज के साथ। कोलोराडो काउंटी में केसेस 16 हैं और 11 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, जबकि सैन जैसिंतो काउंटी में टोटल 17 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया है, जिनमें से 6 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। कोरोना वायरस पैंडेमिक के बीच ह्यूस्टन एरिया में बर्गरीज, असॉल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस में स्पाइक देखने को मिला है। लेटेस्ट इंसिडेंट में चैंपियन सेंटर ड्राइव के ब्लॉक 13223 में एक शख्स को गोली मार के कत्ल कर दिया गया। HPDC ऑफिसर्स एक्सटेंडेड स्टे अमेरिका में शूटिंग की खबर मिलते ही भी वहां पर पहुंच गए तो उन्होंने एक रूम में मेल विक्टिम को गन शॉट के साथ पाया। पुलिस के मुताबिक जब वो वहां पहुंचे तो विक्टिम की डेथ हो चुकी थी। लोकेशन से एक गन भी मिली है। पुलिस ने मर्डर की वजह जानने के लिए
इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। So around midnight, some residents here, I think Sin and Stay, reported hearing a disturbance followed by a gunshot. They were approached by a couple people that confirmed that information, told them that somebody had been shot, and pointed in the direction of a room. One of the residents here grabbed a security guard, and they obtained a key for the room, master key, did a welfare check on the person, went into the room, confirmed there was a man inside that was not conscious. They attempted to render aid to him. About that time, HFD arrived and performed their own CPR and resuscitations to him and pronounced him at the scene. HPD Homicide arrived, and we've conducted our investigation right now, and we have some people that we believe might be involved or have some information that are down at 1200 Travis right now speaking with us, and that's essentially where we're at with this investigation. We have some surveillance footage that we think may be captured, some vehicles that might be involved in this leaving the scene. इकोनॉमी और सिटीजन्स को कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से पैदा होने वाले क्राइसिस से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स की तरफ से प्रेजेंट किए जाने वाले 3 ट्रिलियन बिल पर आज डिबेट और वोटिंग होगी। ये बिल हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी और उनके फेलो डेमोक्रेट्स की तरफ से अनवील किया गया है। बिल में स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए फंड्स, सिटीजन्स को डायरेक्ट पेमेंट्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए हैजर्ड पे के तौर पर $500 बिलियन रखे गए हैं। रिसेंट मंथ्स में कांग्रेस से अप्रूव होने वाले 4 कोरोना वायरस रिस्पांस बिल्स के मुकाबले में इस बिल को हाउस फ्लोर पर रिपब्लिकन्स की तरफ से सपोर्ट के चांसेस बहुत कम हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन इस साल के आखिर तक डेवलप कर ली जाए। उन्होंने कहा कि मिलिट्री की मदद से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन साथ शुरू कर दी जाएगी। I think we're going to have a vaccine by the end of the year, and I think distribution will take place almost simultaneously because we've geared up the military, and you'll see that tomorrow. So, Dr. Bright is up there testifying today. Everything he's complaining about was achieved. Everything he talked about was done. He says he talked about the need for respirators. We procured respirators under the president's direction. But I'll tell you what, to me, I watched this guy for a little while this morning. To me, he's nothing more than a really disgruntled, unhappy person. दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक मास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का विजिट किया है। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा बाकी तमाम लोगों ने मास्क पहन रखे थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अमेरिकन्स को कई बार मास्क पहनने के हवाले से गाइडलाइंस दी गई हैं। व्हाइट हाउस में भी 2 स्टाफ मेंबर्स में कोरोना कंफर्म होने के बाद सख्ती करते हुए स्टाफ के लिए मास्क मैंडेटरी कर दिए गए। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद पब्लिक में मास्क से दूर भागते नजर आए। लास्ट वीक एरिजोना में भी एक मास्क प्रोडक्शन फैसिलिटी का टूर करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क नहीं पहना हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कंफर्म केसेस 1.4 मिलियन एक्सीड कर चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 85,906 बताई जा रही है। स्टेट वाइज देखा जाए तो न्यूयॉर्क में अब तक 353,096 लोग इन्फेक्ट हुए हैं और डेथ टोल बढ़कर 27,641 तक जा पहुंचा है। न्यू जर्सी में 144,704 केसेस और मरने वालों की तादाद 9,946 है। इलिनॉय में 87,937 केसेस कंफर्म हुए और 3,928 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है। मैसाचुसेट्स में 82,182 केसेस और 5,315 डेथ्स हैं। कैलिफोर्निया में 74,164 केसेस और डेथ टोल 3,032 है, जबकि पेंसिल्वेनिया में कंफर्म केसेस की तादाद 63,220 है और 4,218 पेशेंट्स की डेथ हुई है। मिशिगन में टोटल 49,582 केसेस और 4,787 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जबकि फ्लोरिडा में टोटल 43,210 केसेस हो चुके हैं और 1,948 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई। टेक्सास में टोटल 44,775 केसेस हैं और 1,258 डेथ्स हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क में कोविड-19 के लिए ट्रीट किए जाने वाले 1/3 पेशेंट्स किडनी इंजरी का शिकार हुए हैं। यूएस रिसर्चर्स ने एक रिपोर्ट में बताया है कि इनमें से 14% लोगों का डायलिसिस करवाना पड़ा है। इस रिसर्च पर न्यूयॉर्क स्टेट के लार्जेस्ट हेल्थ प्रोवाइडर नॉर्थवर्ल्ड हेल्थ की एक टीम ने काम किया है।
डॉक्टर कैनर जवेरी ने किडनी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश की जाने वाली फाइंडिंग्स में लिखा है कि 5,449 कोरोना पेशेंट्स में से 36.6% में एक्यूट रीनल फेलियर या फिर किडनी इंजरी देखी गई है। किडनी इंजरी वाले पेशेंट्स में से 14% को डायलिसिस करवाना पड़ा। 37.3% पेशेंट्स को या तो फेलिंग किडनीज के साथ हॉस्पिटल लाया गया या फिर एडमिट होने के 24 आवर्स के बाद उन्हें ये कंडीशंस डेवलप हुई। ज्यादातर केसेस में क्रिटिकल इल पेशेंट्स में किडनी फेलियर उस वक्त देखा गया जब उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ी। वेंटिलेटर पर रखे जाने वाले 1000 पेशेंट्स में से 90% में एक्यूट किडनी फेलियर डेवलप हुआ है। डॉक्टर कैनर जवेरी ने लिखा है कि यह स्टडी न्यू पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। We studied patients from March 1st to April 5th at our 13 academic institutions, and of the 5,449 patients, 36.6% of them developed acute renal failure or kidney injury. Of the ones that got kidney injury, 14% required dialysis. Kidney failure occurred very early on during the admission, if it did occur. So that was a very interesting finding. And the other thing was it was happening very proximate to mechanical ventilation. So when the patient went to really bad respiratory failure, needing ventilation, is when most of the kidney failure was happening. The amount was really shocking. So I don't think this is COVID related. Any sort of sick condition, could be a heart attack, could be a flu. If you're getting that sick that you require, ventilation and in the ICU, the kidneys can get affected. So these patients are very, very sick, the ones that ended up needing dialysis and with severe kidney failure. Related to being extremely sick and having low blood pressures and very toxic environment, where everything, a lot of the organs are shutting down and not just the kidney. So I think it's related to all that milieu of being extremely sick with the big cytokine storm they talk about with COVID. I think that it's related to just being very sick and being on a ventilator, being in the ICU. But there are studies coming back and forth where the virus could be in the kidney, and maybe there is an effect on the kidney directly from the virus, but the jury is still out on that. There is very scant information on that right now. विसल ब्लोअर डॉक्टर रिक ब्राइड ने अनवील किया है कि उन्हें कोरोना वायरस मामले पर कंसर्न्स रेज करने पर गवर्नमेंट पोस्ट से हटाया गया। कांग्रेशनल हियरिंग में उन्होंने वार्न किया है कि पेंडेमिक के खिलाफ रिस्पांस में बेहतरी ना लाई गई तो यूनाइटेड स्टेट्स डार्केस्ट विंटर फेस कर सकता है। ब्राइट को लास्ट मंथ बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर की पोस्ट से रिमूव किया गया था। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पैनल के सामने आउटब्रेक के लिए तैयारी के हवाले से टेस्टिफाई करते हुए डॉक्टर ब्राइट ने कहा कि कोई भी कदम उठाने से पहले बेस्ट साइंटिफिक माइंड्स की गाइडलाइन को सामने रखा जाए। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाजा बंद हो रहा है। अगर रिस्पांस में बेहतरी ना लाई गई तो डर है कि पेंडेमिक फर्दर वर्स हो सकता है। Americans yearn to get back to work, to open their businesses and to provide for their families. I get that. However, what we do must be done carefully with guidance from the best scientific minds. Our window of opportunity is closing. If we fail to improve our response now based on science, I fear the pandemic will get worse and be prolonged. There will be likely a resurgence of COVID-19 this fall. It'll be greatly compounded by the challenges of seasonal influenza. Without better planning, 2020 could be the darkest winter in modern history. First and foremost, we need to be truthful with the American people. Americans deserve the truth. The truth must be based on science. We have the world's greatest scientists. Let us lead. Let us speak without fear of retribution. Our nation was not as prepared as we should have been, as we could have been. Some scientists raised early warning signals that were overlooked, and pages from our pandemic playbook were ignored by some in leadership. There will be plenty of time to look back to assess what has happened so we can improve. But right now, we need to focus on getting things right going forward. We need a comprehensive plan that everyone knows and everyone participates in. कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने अगले फिस्कल ईयर के लिए प्रपोज बजट में $19 मिलियन की कमी कर दी है।
रिवाइज बजट में पब्लिक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ दूसरे प्लान्स के लिए बजट कट कर दिया जाएगा। स्टेट एम्प्लॉयज को 10% पे कट्स का सामना करना पड़ेगा और एजेंसीज को एफिशिएंसी 5% बढ़ाने का कहा जाएगा। बजट अप्रूवल के लिए डेमोक्रेटिक कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया जाएगा। This is simply without precedent. These numbers, these unemployment numbers, the economic consequences of COVID-19 are not only being felt statistically, but they haven't been felt like this since the Great Depression. These are not normal numbers, even in a state so familiar with the vagaries of revenue, the increases and declines because the volatility of our tax system. These are simply without precedent in modern times. The current budget proposal, May revise that we're putting out, reflects a decline of 22.3% in revenue from the January budget. The budget we put out today is $133.9 billion general fund, some $203.3 billion overall budget. The general fund reflects a 9.4% decrease from the Budget Act of 2019. The overall budget, about a 5.4% decrease from the 2019 Budget Act. In that spirit of growth and inclusion and health, we submit this budget, and we do so, final words, with a recognition that the enormity of task at hand cannot just be borne by a state. The federal government has a moral and ethical and economic obligation to help support the states. After all, what is the point of government? स्टेट में फर्दर बिजनेसेस की रीओपनिंग के हवाले से कैलिफोर्नियंस डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रो ओपन इकॉनमी साइड है जो कि जल्द रिस्ट्रिक्शंस खत्म होते देखना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एहतियात से काम ले रहे हैं और चाहते हैं कि कोरोना कंट्रोल होने तक रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा और वक्त दिया जाए। People right now, not that they don't have a purpose in life, but I think that we all tie what we do for work as part of our purpose in life, and we benefit from doing that. So yeah, I do feel pretty strongly that we do need to get back to work. The guidelines were 14 days of decreasing in numbers, and we haven't had 14 days of that. It still rises. And people are not taking precautions when they are out. I think we should hold off a little bit because we're doing such a great job doing the quarantine. Everyone's doing their part, staying in, and we're getting the numbers down. I think if we open up the communities, it's a little bit too soon, and it opens us to risk for a big second wave. मिनीसोटा में गवर्नर टिम वॉल्स के घर के बाहर सैकड़ों लोगों ने स्टे एट होम ऑर्डर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्टर्स ने डिमांड किया कि स्टेट अब खोल दिया जाना चाहिए। बहुत से प्रोटेस्टर्स ने साइंस उठा रखे थे जिन पर लिखा था दिस इज पॉलिटिकल फोक्स, नो वायरस नो फियर एंड वी हैव बीन लाइड टू लिखा हुआ था। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने कंसर्न्स शो किए कि प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन को गवर्नमेंट पावर अब्यूज करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। एक व्हाइट हाउस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में मिनेसोटा में 4000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए। स्टेट में कोविड-19 से मरने वालों में से 80% लोग नर्सिंग होम रेजिडेंट्स बताए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना अपना कैसा असर दिखा रहा है, इस पर अगर बात करें तो टोटल कंफर्म केसेस 4.4 मिलियन से ऊपर जा चुके हैं। वायरस से मरने वालों की तादाद 300,000 क्रॉस कर चुकी है। जॉन हॉपकिंस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में कंफर्म कोरोना वायरस केसेस की तादाद 1.4 मिलियन से ऊपर जा चुकी है और 85,906 लोगों की डेथ हुई है। टॉप अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रशिया मौजूद है, लेकिन वहां मरने वालों की तादाद दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में बहुत कम है। रशिया में टोटल कंफर्म केसेस 252,245 हो चुके हैं और डेथ टोल 2,305 रिपोर्ट हुई हैं। यूनाइटेड किंगडम में 234,441 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए और 33,693 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। इटली में टोटल 223,096 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेथ टोल 31,368 है। ब्राजील में 203,165 केसेस और 13,999 डेथ्स रिपोर्ट हुए। फ्रांस में टोटल 178,994 लोगों में टेस्ट पॉजिटिव आया और डेथ टोल 27,428 है। जर्मनी में 174,478 केसेस रिपोर्ट हुए और 7,884 डेथ्स और टर्की में 144,749 केसेस और 4,007 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है।
ईरान में 114,533 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस और 6,854 लोगों की डेथ हुई है। चाइना में अब तक टोटल 84,029 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेथ टोल 4,637 है। इंडिया में 82,103 लोगों में वायरस पाया गया, जबकि 2,649 पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हुई है। चाइना ने अनाउंस किया है कि कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के दूसरे फेज के लिए तैयार है। चाइना की नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया कि कुछ वैक्सीन्स के सेकेंड फेज क्लिनिकल ट्रायल्स जुलाई तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस मिनिस्टर ने कहा कि अभी तक वैक्सीन के हवाले से किसी भी मेजर एडवर्स रिएक्शन की रिपोर्ट नहीं मिली। इस मौके पर एक और ऑफिशियल ने क्लेम किया कि चाइना में इंपोर्टेड इन्फेक्शंस की वजह से वायरस ने फिर से सर उठा लिया है, लेकिन सिचुएशन अब कंट्रोलेबल है। मई 14 को मेनलैंड चाइना में 4 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बताया जा रहा है कि सारे केसेस लोकली ट्रांसमिटेड हैं, क्योंकि चाइना में मार्च के आखिर से फॉरेनर्स की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। और अब एक नजर डालते हैं लोकल ह्यूस्टन वेदर पर। And that's all for now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.